Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज ऑनलाइन हमारे बीच हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines first. At the stock markets, Sensex shoots up 777 points. Nifty jumps 235 points. Rupee weakens 9 paise against the dollar. Maruti Suzuki to hike car prices from January next year. And paddy procurement in the Kharif marketing season 2021-22 stands at 290 lakh metric tons till November the 30th. शेयर बाजारों में सेंसेक्स 777 अंकों के उछाल में रहा। निफ्टी में 235 अंकों की तेजी दर्ज हुई। रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट में रहा। मारुति सुजुकी अगले वर्ष जनवरी से अपनी कार की कीमतों में करेगी वृद्धि और इस खरीफ मौसम में 30 नवंबर तक 2 करोड़ 90 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदारी सरकार द्वारा की जा चुकी है। शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.4% की तेजी से 777 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 58,461 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.4% की ही वृद्धि दर्ज करते हुए 235 अंकों के उछाल से 17,402 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1% की वृद्धि दर्ज हुई और स्मॉल कैप सूचकांक 1.1% बढ़कर बंद हुआ। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange shot up 777 points or 1.4% to end at 58,461 today. Nifty at the National Stock Exchange jumped 235 points or 1.4% to 17,402. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index added 1% and the Small Cap Index climbed 1.1%. All the sectoral indices on the BSE ended higher. So the Utilities Index jumped 2.2%, the Power Index climbed 2.1%, the IT and the Tech Index advanced 1.9% each, the Oil and Gas Index added 1.7%, the Metal Index rose 1.5%, Basic Material Index gained 1.4%, the Industrials, the Finance and the Telecom Index moved up 1.2% each. The Realty and the FMCG Index gained 1.1% each. The Consumer Discretionary, the Auto and the Energy Index climbed 1% each. The Healthcare Index rose 0.9% and the Consumer Durables and the Capital Goods Index moved up 0.7%. So Rajiv, we've seen an oscillation on the Sensex at 60,000 plus a few days back to now 58,000 plus. Can we still say, despite the ups and downs, that we are on a firm footing? We have reclaimed the robust economy? Two things, Alima. One is that, of course, it's such an uncertain time. We spoke at around 3 in the afternoon today. At that point of time, Nifty was up by 235 points, and Dow Jones Futures was quoting at a possible opening of a 200 point plus. Right now, Dow Jones are likely to open 460 points down, and Nasdaq is down, futures are down by 3%, and SGX Nifty is trading with a cut of 100 points. So within 3.5 hours of speaking, the whole picture has changed. I don't know whether it's on firm footing, but it's surely on a very volatile footing. I mean, the markets are likely to remain volatile given the fact that the news flow, any statement coming from either a medical regulator or, any medical
either a vaccine company or any other person is going to make market move in a extremely volatile direction. So whether we have recovered or not, I mean, the chances are that if there is no major bad news on the Omicron front, we are on a firm footing. But otherwise, I think volatility is going to be the order of the day for next couple of weeks. So राजीव, आप कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट्स को भी और इकोनॉमिक सेंटिमेंट को भी अभी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि भारतीय जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है उसके मजबूत इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अगर ये ओमिक्रॉन की सिचुएशन वर्सन होती है तो वहां पर भी कुछ डाउट्स आ सकते हैं. हाँ, बिल्कुल वहां पे डाउट इसलिए आ सकते हैं क्योंकि देखिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाएंगी. मुझे नहीं ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा कि आप देखेंगे कि मतलब बाजारों में मतलब कोई मेजर लॉकडाउन वगैरह तो नहीं हम देखेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि यूरोप के पोर्ट्स पे लॉकडाउन हो जाता है और वहां से सप्लाईज कम हो जाती हैं या कंटेनर्स का मिलना मुश्किल हो जाता है तो वो एक इन्फ्लेशन में एडिशन कर देता है या कंपनीज के एक्सपोर्ट मुश्किल हो जाते हैं. तो ऑल दोस थिंग्स जो है दे गेट कंबाइंड टुगेदर एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो वो एक रिस्क है विच वी हैव टू डील विद, द मार्केट विल हैव टू डील विद. और बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो पर दोबारा हो सकता है वो बढ़ गई है. तो आपको लगता है कि अभी कोई स्कोप है वैल्यू बाइंग का? अभी जो लेवल्स हैं, जैसा लालिमा कह रही थी कि 60 प्लस से 58 प्लस पे आ गया है, क्या आपको कोई वैल्यू बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं इस बाजार में? नहीं, अभी मुझे ऐसा कुछ वैल्यू बाइंग जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप देखें कि काफी वैल्यूएशन काफी गिरी हुई है एज कम्पेयर टू देयर हिस्टोरिकल एवरेजेस, या in terms of they are very cheap, in terms of the earnings are high or dividend yields के basis पे, I don't think so कि at this point of time market is largely towards the higher valuation side, on the contrary. So I don't think so there is, it's not that कि buying की opportunities नहीं होंगी, लेकिन not value buying. I would say the buying comes attendant with a decent amount of risk, both of decline in the valuation itself and the decline in earnings also. And Rajiv, if someone were to invest today, what would your advice be? In what sectors would it be a safe bet? Well, I would suggest that that person, if to go through mutual fund right now and have a diversified portfolio. Don't bet on a sector. I mean, but if you put a gun to on my head and say sectors, I would say IT is one sector where the tailwinds are far more as compared to headwinds. The whole world is moving towards digitization. What companies were planning to do in 5 years, they have been forced to do in 2 years. Right. And given the fact that, IT companies are finding it extremely hard to find people to finish the work, it is very clear that the demand for their services is extremely high. So that is one area which actually has benefited a lot from COVID. Mm-hmm. Now, because of which, that is the only sector I can see to be, literally kind of insulated. And the quality of the balance sheets of those companies have been, some of the large companies is extremely strong. Cash position is very strong. Mm-hmm. And most of them have a decent management track record of giving returns to the shareholder either through buybacks or through, generous dividend payouts. So that is the only area, if I was to, I have no other option but to invest. That's one area where I will put my money in. So राजीव, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बाजार में लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स, उनके लिए आपकी अभी की जो सिचुएशन है उसमें एक ब्रॉड एडवाइस क्या होगी? देखिए सोनी, वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट हैं वो उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है. अगर तो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट हैं, मिड छोटे स्मॉल कैप्स आदि कंपनी आईबीसी में, जो वो लोग जो टिप के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, ये आज बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, उनका तो मेरी सहानुभूति उनके लिए मैं उन्हें एडवांस में दे देता हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों बाद वो अपनी वेल्थ है उसको इरोड होता देखेंगे. इट डिपेंड आपकी क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो क्या है. अगर आपके पास लार्ज कैप स्टॉक्स है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आपने 2000 के पीक आईटी बुल रन पे भी इन्फोसिस उस दिन खरीद लिया होता जिस दिन के बाद पूरा टेक बूम जो है वो बस्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके बावजूद भी आपको फार बेटर रिटर्न्स आई हैं. बट अगर आपने उस टाइम पे एक शेयर खरीदे होते, ग्लोबल टेली सिस्टम, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, ये वो कंपनियां
जो शायद आज लोग नाम भी नहीं जानते, पर उस जमाने में सन 2000 में ये बहुत पेंटाफोर सॉफ्टवेयर, ऐसे नाम बहुत सारे चलते, उनको इमर्जिंग कंपनीज, किसी को ये दुनिया भर के अखबारों में छाए होते थे। अगर आपने वो शेयर ले लिया है तो वो आप 2001 में आपका पैसा 99% खत्म हो चुका था। सो जब आप मेरे से पूछते हैं कि जो ब्रॉडर किसने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है या उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में कर रखा है, SIP कर रहे हैं, करते रहिए बिना स्ट्रेस के। वो ये ओमिक्रॉन हो या उसका अगला कोई वेरिएंट भी आए वो भी निकल जाएगा। सब चीजें हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, वो सॉल्व हो जाती है एंड मार्केट मूव्स ऑन इट्स ओन हाई। बट अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ स्टॉक बेकार है, मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, कंपनीज लाइक पीपल हैड स्टॉक्स लाइक जयप्रकाश इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत लोगों ने अगर जिन्होंने 2012 इस बुलरन में वो शेयर लिए थे, उनके लिए ये बुलरन 2007 साल का बुलरन नहीं है, क्योंकि वो तो स्टॉक आज भी उस भाव से 50% नीचे है। बट अगर आपके पास क्वालिटी कंपनी थी, TCS था, इन्फोसिस था, या आपके पास बाकी अच्छी कंपनीज के शेयर थे, बड़ी कंपनीज के लार्ज, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल प्रूवन है, तो वो उनके लिए तो आज भी बुलरन है, तो और थोड़े दिनों की करेक्शन के बाद भी बुलरन शुरू हो जाएगा। So what it depends on what you have in your portfolio. That is the essential part. तो पिछले साल अगर हम देखें, जब कोरोना आया था, तो जब थोड़ा सा उससे जूझने की शुरुआत हो गई, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स द्वारा हो या फिस्कल स्टिमुलस द्वारा हो, सो रिलीफ रैली जो आई थी वो बहुत ही बड़ी रिलीफ रैली थी। सो आपको लगता है कि मार्केट्स में अभी भी वो स्ट्रेंथ है एक्शन रिप्ले के लिए? नहीं, देखिए, एक्शन रिप्ले वो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट था, और ना तो किसी को पता था कि ये वायरस जो है वो कितना कैसे पैन आउट होगा, कितना फैलेगा, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो करेगा। इट वाज अ रियल ब्लैक स्वैन काइंड ऑफ इवेंट था, जिसका किसी को कुछ नहीं पता था। सो अनसर्टेनिटी का रिएक्शन हमेशा होता है डर, और डर का मतलब कि बाजार में भाव गिरेंगे। पर उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होती गई, और ये क्लियर होता गया कि हाँ प्रॉब्लम है, बट देयर आर सोल्यूशंस टू इट आल्सो विच विल इमर्ज आउट वेरी सून। देखिए, आप अगर याद करें तो करीब 2-2.5 महीने बाद ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि फर्स्ट फेज क्लिनिकल ट्रायल्स के मई जून में ही क्लिनिकल ट्रायल, ये सब बातें शुरू हो चुकी थी ग्लोबली। नवंबर दिसंबर में तो क्लियर हो गया था कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई थी। सो वो एक अलग फेज था, ये एक अलग फेज है। पिछले बार भी जो रिपीट थी कि सेंट्रल बैंक हैड डिसाइडेड के इजी मनी प्रिंटिंग जो है वे आउट है किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस का। वो आपने 2008 में भी अप्लाई करा, वो आपने उसके बाद 2014 में भी अप्लाई करा, आपने सन 2001 में भी वही अप्लाई करा था आफ्टर 9/11 अटैक्स हैपेंड। द पॉइंट इज के आप इसको उस समय जब आप पहले इतनी लिक्विडिटी दे चुके हैं, उसको कितना कर देंगे वो एक क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट आई थिंक देयर इज सम जो स्कोप है अभी उसका कम है, गिवन द फैक्ट इन्फ्लेशन विल बिकम अ बिगर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। Right. Yes, inflation is going to be a big question mark. And what about the fact, Rajiv, that we've been doing very good on the manufacturing front? Manufacturing PMI has hit 10-month high, and around Diwali, there were unprecedented sales. How do you explain that vis-a-vis that economy? See, our economy is doing well for two reasons. One, of course, we were always a domestic-focused economy. If you look at the government expenditure has been keeping us alive, pushing things. The way the government expenditure was done on infrastructure was fantastic. Look at the amount of, the roads and build projects and all infra projects which have come up. Absolutely. And which helped to, a lot of sectors. Even during the pandemic, the first sector to get open was the infrastructure and all. So that helped push the demand. So our things have been, and another reason is we have, during this period, some industries it has become absolutely clear that our dependence on import was largely kind of an addiction. The imports became tougher, both because of the fact that the countries were facing lockdown, and also because some countries acted smart in trying to, they wanted to kind of create some trouble. But our industry was smart enough to either substitute or create their own capacities, repurpose things and do things along with it. So that is where the manufacturing has learnt a lesson in COVID.
especially if you look at the chemical space. Yeah. Those things have, this has been a big learning lesson for our industry. And I think there's a high probability that if our policy remains supportive, if there are some little bit tinkering in terms of, more flexibility given, I think there is a high chance that India, what it had missed from 1994 onwards, we kind of started missing the manufacturing bus. Mm-hmm. We have one more chance to get back on the manufacturing bus and become become self-dependent and also become an exporting hub. Because now globally also, their corporations, when they were earlier used to discuss, they only discuss, we have to put a plant in China. Now they say no, it's China or India, China plus one. So it depends on how, as a country, either as corporates, policy makers are able to take the advantage of it. And I think we've been going through the ease of doing business reforms, and also one beautiful example is that of making masks and PPE kits in our country and exporting. While we move on, yes, Sonu with more news now. एक आखिरी सवाल बाजारों पर, अगर हम भारत की बात करें, जैसा आपने कहा कि भारत की जो सिचुएशन है वो कंपैरेटिवली बेटर है. अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो अमेरिका में 30-year हाई पे है, यूरोप में रिकॉर्ड हाइस पर है. हमारी जो सिचुएशन है वो वेल अंडर कंट्रोल है. आरबीआई के जो भी रेंज है उसके अंदर ही है. और जो पेट्रोल और डीजल के डोमेस्टिक प्राइसेस भी घटाई गई हैं. जीडीपी Q2 की 8.4% आई है, विच इज हायर देन एक्सपेक्टेशन. सो आपको लगता है इंडियन मार्केट्स जो कहें कि आउट परफॉर्मेंस रही है उनकी इमर्जिंग मार्केट्स में पिछले कुछ महीनों में, वो संभावना है कि वो कंटिन्यू करेगी? और दूसरा, एफआईआईज अगर सपोर्ट हटाते भी हैं, जैसा हमने अक्टूबर और नवंबर में देखा है, तो आपको लगता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स सेगमेंट में इतनी स्ट्रेंथ है कि बाजार को संभाल सकें? बाजार को संभालना आप 5-10%. Sorry, please repeat, Rajiv. Sorry, yeah. Okay. Yeah, please repeat. See, as far as the correction is concerned, आप अगर 10 या 15% जो बाजार डिक्लाइन होता है, अगर आप अभी भी देखें तो 9% अपने हाई से नीचे आ गया था, तो वो करेक्शन एक नॉर्मल पार्ट ऑफ करेक्शन है. तो आई डोंट थिंक सो दैट इज एन इशू. और वो उसमें अगर एफआई सपोर्ट आपने 2 महीने की बात करी, आई थिंक उससे पहले भी एपिसोड हो चुके हैं जहां पे हमने देखा है कि एफआईज हैव बीन नेगेटिव और उनको सेलर्स हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल एसआईपी मनी इज हेल्पिंग इट. आई डोंट थिंक सो दैट एफआईज are absolutely irrelevant, but they're far less relevant than what they used to be 5 years back. Coming to your, आपने जो कहा जहाँ से इकोनॉमिक में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर ऑयल प्राइसेस क्रॉस करते हैं $85 और सस्टेन उसी मूव पे रहते हैं, तब इन्फ्लेशन जो है आज तो बाकी कंट्रीज से ज्यादा कम रही है, लेकिन हमारे यहाँ लॉजिस्टिक इन्फ्लेशन, बाकी इन्फ्लेशन, वो एक पेन पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा जहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो सकती है. इनफैक्ट अभी वही एक आई थिंक एरिया जहाँ पे रिलीफ है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन कि $70 के करीब पर बैरल के करीब आ गया है ऑयल. करेंसी बाजार पर भी एक नजर डाल लेते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज ₹9 कमजोर होकर $1 की तुलना में ₹75 के स्तर पर बंद हुआ. ऐसे दिन जब बाजार में तेजी है, रुपए में गिरावट आना, क्या ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता जी, क्योंकि जो करेंसी मार्केट है उसकी अपनी जो सेटलमेंट है या अपनी जो ट्रेडिंग है उसका भी इम्पैक्ट होता है. बट श्योरली 9 पैसा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि बाजार बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल जो है थोड़ी सी वीकनेस रुपये में आ सकती है बिकॉज इट इज वेरी क्लियर कि टेपरिंग जो है वो फेड अपने हिसाब से करेगा और वो उसके चलते सारी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में होगा. इन द पॉसिबिलिटी इज कि हम उसमें भी आउट परफॉर्म कर दें, बट सम अमाउंट ऑफ वीकनेस इज बाउंड टू कम इन इंडियन रुपी. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. एशियाई बाजारों में आज बिना किसी खास बदलाव के मिला जुला रुख रहा. हालांकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के असर को लेकर ठोस जानकारी के अभाव में बाजार दिशा की तलाश में थे. जापान का निक्केई सूचकांक 0.7% की गिरावट में रहा. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.1% के नुकसान पर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% की गिरावट रही. हालांकि टेक क्षेत्रों में तेजी के बल पर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.6% के उछाल में रहा. हांगकांग के
हैंगसेंग में 0.6% की वृद्धि दर्ज हुई। आर्थिक खबरों में चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र में बढ़त इस खबर के बल पर आई कि चीन की 3 डेवलपर कंपनियां ऑन शोर बॉन्ड बेचकर 18 अरब युआन यानी $2.8 अरब की कुल राशि जुटाएंगी, जिससे संकेत मिलता है कि चीन की सरकार नकदी के संकट से ग्रस्त रियल्टी क्षेत्र के लिए तरलता की स्थिति में ढील दे रही है। यूरोपीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ खुलने के बाद दिन के कारोबार में मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.6% गिर गया था। फ्रांस के कैक में 0.7% की मंदी थी और जर्मनी का डैक्स 0.8% की गिरावट पर था। A look at the U.S. markets now. On Wall Street, major indices ended more than 1% lower yesterday after a morning rally faded as investor angst about the latest coronavirus variant soared with the first U.S. case confirmation, while the market also digested Fed comments on inflation. Late in the day, the U.S. Centers for Disease Control said the country had detected its first case of the Omicron variant, which had infected a person who came from South Africa, where the variant was initially discovered. Earlier in the day, yesterday, Federal Reserve Chair Jerome Powell said policymakers needed to be ready to respond to the possibility inflation may not recede in the second half of next year as expected. So the Dow Jones Industrial Average declined 462 points or 1.3% to end at 34,022. The S&P 500 lost 54 points or 1.2% to close at 4,513. And the Nasdaq Composite dropped 284 points to 15,254. Again, we come to the fact, and as Sonu was just mentioning, Rajiv, inflation's looming large on the U.S. markets. Hello? Yeah. Yeah, could you please repeat? We lost your voice, Rajiv. Yeah. See, that is the biggest concern for you, not only for US but for all the emerging markets. If inflation increases in US and it sustains at those levels, the interest rates in US going to go up. That means the flow of money to emerging markets is bound to come down, and the asset prices, which have seen a sharp rise in the last 1.5 years, especially in the commodity producing countries and other emerging countries, they're going to cool down. Now, that cooling down is most likely to be unlikely to be. Initial phase might be volatile, but I don't think so we're going to see a repeat of 2013 or that kind of a thing. But if inflation in US stays at higher level, then it's a problem for the whole world actually. So, and that is where because you see that's the mother. It's a mother country which supply control of the capital to the world. Yeah. राजीव, ब्रीफली ओमिक्रॉन अगर फिर से जैसा वहां पे भी यूएस में भी शुरू हो गया है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो खतरा पैदा होगा, आपको लगता है उसको देखते हुए सेंट्रल बैंक्स का जो काम है वो और भी मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ आपको इन्फ्लेशन जो डिमांड साइड से इतनी ज्यादा है भी नहीं, सप्लाई साइड प्रेशर्स है, उससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से शायद उतना फायदा भी ना हो. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. Actually, you're right. It's a difficult situation. It's a situation where आपने जो इजी मनी पॉलिसी की डोज थी वो तो आपने दे दी, पर उसके बाद एक नया सेट ऑफ प्रॉब्लम आ गई. आप पेशेंट को फिर दोबारा वही दवाई देंगे तो उसका इंक्रीमेंटल इफेक्ट जो है, पॉजिटिव इफेक्ट जो है, वो नहीं होगा उतना. सो दे हैव टू नाउ वे बिटवीन के वो इन्फ्लेशन के कितने पार्ट को सप्लाई लेड माने, कितने पार्ट को डिमांड लेड माने. और एक और पेक्यूलर प्रॉब्लम जो यूएस में है वो ये है कि जो हेलीकॉप्टर मनी बरसाया गया उसकी वजह से जो कई लोग ऐसे हैं जो जॉब से में वापस जाना नहीं चाहते. कई ऐसी स्टेटमेंट आई है यूएस की कई एजेंसी से कि उनको इतने लोगों की जरूरत है, वो इतने दिनों से एप्लीकेशन मंगा रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन गेटिंग 20% ऑफ दैट. सो इन अ सच अ सिनेरियो आई थिंक द जॉब ऑफ सेंट्रल बैंक्स becomes tougher, and a policy जो वो 20 साल से फॉलो कर रहे थे, that is move out of trouble by printing more money, may not work at this point of time, at least for next 6 months to a year. They have to find a different solution this time. And you use a nice word, nice phrase, Rajiv, helicopter money. Yes, truly we are observing that a lot of people don't want to get back to the job, Sonu. They're just so happy enjoying the benefits and staying at home, the pleasures of staying at working from home. All right, we move on to another news. Automaker Maruti Suzuki informed the stock exchanges today that it will be hiking prices in January 2022. The company in its filing to the exchange said over the past year, the cost of company's vehicles
vehicles continues to be adversely impacted due to increase in various input costs. Therefore, it has become imperative for the company to pass on some impact of the above additional costs to customers through a price hike. The statement further read, the price rise has been planned in January 2022. The increase shall vary for different models. उधर सरकार ने आज कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से धान की खरीद की जा रही है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने बताया कि इस खरीफ मौसम में 290 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदारी की जा चुकी है। सरकार के अनुसार 57,032 करोड़ रुपए की लागत की सरकारी खरीद से 18 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि खरीफ फसल की सबसे अधिक खरीदारी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में की गई है। India and European Union, that's EU, have agreed to step up their clean energy and climate partnership. India-EU Energy Panel met yesterday, which was co-chaired by India's Ministry of External Affairs Secretary West, Reenat Sandhu, and Deputy Director General for Energy, European Commission, Mechthild Worsdorfer. They jointly agreed on a detailed work program until 2023 to implement the 2016 India-EU Clean Energy and Climate Partnership. और अब चलें कमोडिटीज की ओर लालिमा। Yes, absolutely. Would you take that? Gold declined 280 rupees to 46,657 rupees per 10 grams at Delhi's bullion market today on weak global cues. But silver gained 212 rupees to 61,337 rupees per kilogram. In the international market, gold was trading lower at $1,775 per ounce. Silver was flat at $22.33 per ounce. And a look at the oil prices. Well, global oil prices have lost more than $10 a barrel since last Thursday when news of Omicron first shook investors. Global crude oil prices rose sharply today, with the investors adjusting positions ahead of an OPEC Plus decision on supply policy, though gains were kept by fears that Omicron coronavirus variant could hit fuel demand. So Brent crude oil futures climbed $1.56 to trade at $70.43 a barrel. US crude futures advanced $1.52 to $67.09 a barrel. राजीव, हालांकि आज बढ़ा है प्राइस ऑयल का, लेकिन जो ओवरऑल प्राइस है अराउंड $70, अभी हम 82, 84 पे थे कुछ दिन पहले। आपको लगता है कि ओमिक्रॉन का ये एक कहें कि सिल्वर लाइनिंग इन अ डार्क क्लाउड है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, कि हम कह सकते हैं, बिकॉज ये वो जो स्पेकुलेटिव मनी है वो एकदम बाहर निकला या पोजीशन स्क्वायर ऑफ है, इसकी वजह से हो गया। बट आई डोंट थिंक सो, जरा सा भी न्यूज आती है आई थिंक बिकॉज लिक्विडिटी अपनी प्राइस को मान करें, बिकॉज राइट नाउ जो डिमांड है वो इसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो एकदम चाइना। एक्सक्यूज मी राजीव, कुड यू बी लाउडर? वी आर लूजिंग योर वॉइस। यस। Yeah, I think that this decline जो है वो I think short-lived है, because there's a reasonable risk that if the news on the Omicron is that it's not going to be an extremely painful thing, then I think the oil prices and other commodity prices also, especially some of the non-ferrous ones, are the ones which are going to move up very sharply in near future. So आपको लगता है OPEC Plus शायद कोई कदम उठाए प्रोडक्शन कट्स को रिस्टोर करने का? Briefly, I don't think so. I think OPEC will never like to have oil prices move below a certain level. राजीव, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. And friends, before we wrap up, here's a reminder of the headlines again. At the stock market, Sensex shoots up 777 points. Nifty jumps 235 points. Rupee weakens 9 paise against the dollar. Maruti Suzuki to hike car prices from January next year. And paddy procurement in the Kharif marketing season 2021-22 stands at 290 lakh metric tons till November the 30th. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalema Aneja Dang and my co-anchor Sonu Sood signing off. Namaskar. Market Mantra.